So hello everyone, we are continuing our video, ठीक है, और and we are continuing our playlist for dual nature, ठीक है। तो अब आप अभी को आपको सभी 12th में जितने भी लेसन्स है उन सभी के आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, सभी लेसन्स की आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। वो प्लेलिस्ट में सभी टॉपिक्स होंगे, टॉपिक्स का एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एंड प्रॉपर डेरिवेशन प्रूफ, है ना, सारी चीजें आपको वहाँ मिलेगी। और खत्म होने के बाद में, थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म होने के बाद में जितने भी वहाँ न्यूमेरिकल्स है हम लोग आपको न्यूमेरिकल्स भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए चैनल के साथ में, कंटिन्यू और वॉचिंग। ओके, चलिए तो सामने चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, हमारे ड्यूअल नेचर के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, दैट इज एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखेंगे हम लोग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का, ठीक है। सबसे पहले अभी तो इसको डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर को हम लोग दूसरे नाम से भी अगर आप लोग बोले तो वो बोला भी जा सकता है, या हम लोग मान के चल सकते हैं कि भैया इसका दूसरा नाम यही होगा, है ना, एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक, चलिए समझते हैं। सो व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसमें क्या क्या चीजें होगी, कैसे कैसे पॉसिबिलिटी होगी, क्या क्या ग्राफ्स बनेंगे, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ देखें। ओके, सो दिस इज एक्सपेरिमेंटली सेटअप फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये एक एक्सपेरिमेंटली सेटअप है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का। चलो इसका थोड़ा कंस्ट्रक्शन हम लोग समझ लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या है, कंस्ट्रक्शन में इट इज कंसिस्ट ऑफ इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब। सो दिस इज इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब in which the upper portion of this one, so it is of quartz window. ये quartz window है हमारी, ठीक है, ये quartz window. So this is your quartz window, ये आपका quartz window का portion है आपका. So this is evacuated glass tube. ये आपकी evacuated glass tube है, और ऊपर portion का इसका quartz window है, ठीक है। तो evacuated glass tube में हम लोग ने दो metal plates ली हुई है, एक emitter plate जहाँ से electrons emit होंगे, एंड देयर इज सेकंड इज कलेक्टर प्लेट जहां से इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट किया जाएगा, और उस चीज को कहेंगे हम लोग कलेक्टर प्लेट। सो दिस कलेक्टर प्लेट इज कनेक्टेड टू द मिली एमीटर, ठीक है। द मिली एमीटर मींस दैट इट शोज हाउ मच करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट, ठीक है, या हाउ मच करंट इज प्रोड्यूस्ड इन दिस सर्किट। एंड वोल्टमीटर ये हमारे को बताएगा कि कितना वोल्टेज यहाँ बन रहा है। And this voltmeter is across the load resistance, and this is your electric potential. ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में बहुत अच्छे से हम लोग ने इसको समझ के रखा हुआ है। सो दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्लियर। सो इमिटर प्लेट का जो इमिटर प्लेट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो व्हाइल पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पॉजिटिव टर्मिनल या पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द कलेक्टर प्लेट, क्लियर। चलिए, सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन फॉर दिस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, एंड देयर इज अ सोर्स, एंड जहां से हमारे को रेडिएशंस इंसिडेंट होंगी ऑन द इमिटर प्लेट। इमिटर प्लेट के ऊपर जो रेडिएशंस यहां से इंसिडेंट होंगी, सो दिस इज नथिंग बट योर सोर्स, क्लियर। चले सामने चलते हैं, एंड दिस इज रेडिएशंस, यहां से ये जो है दैट इज इंसिडेशन ऑफ रेडिएशंस ऑन द इमिटर प्लेट, ठीक है। चलिए समझते हैं अभी। सो दिस ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन, ये इसका हो गया कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है कि जिस समय में यहां से रेडिएशन इंसिडेंट होगी, एंड व्हेन दिस रेडिएशन इज इंसिडेंट ऑन द इमिटर प्लेट, सो ड्यू टू इंसिडेशन एंड ड्यू टू इंसिडेशन ऑफ फोटोन, because this radiation consists of discrete packets, and that discrete packets is nothing but the energy, है ना, energy packets, and that energy packets is incident on this emitter plate. So due to that energy incidation, जो एनर्जी इंसिडेंट होगी उसके इंसिडेशन की वजह से कुछ हिस्सा एनर्जी का, कुछ हिस्सा इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव करने के लिए लगेगा, ठीक है, और कुछ हिस्सा ये अपने पास में एब्जॉर्ब करके रखेगा, ठीक है। और उसका दूसरा भी फंक्शन होता है, तो हम लोग उसको बाद वाले डी ब्रोगली में हम लोग देखेंगे उसको, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट हो गए, सो दिस इज इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, एंड दिस इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ड्यू टू द इंसिडेशन ऑफ फोटोन, या इंसिडेशन ऑफ दिस एनर्जी पैकेट्स on this emitter, and this emitted electron is collected by the collector, and hence this current is clear. तो यहाँ से एक डेफिनेशन हम लोग यहाँ से समझ के चलते हैं, that is first definition, and that is very important, that is photoelectric effect. Photoelectric effect. So this is photoelectric effect. What is photoelectric effect? The phenomenon of emission. There is an emission of this electron, and then the phenomenon of emission of electron from कहाँ से, from the metal plate, and when it is exposed to the radiation of desired frequency, and so this effect is called as photoelectric effect.
Clear? So again, I am repeating the definition for photoelectric effect. This phenomenon of emission, the phenomenon of emission of electron from this metal plate, yeah, metal surface, when it is exposed to the radiation of desired frequency, yeah, suitable frequency, is called as photoelectric effect. So this terms is called as photoelectric effect. Again, I am repeating, what is photoelectric effect? The phenomenon of emission of electron from the metal surface when it is exposed to the radiations of suitable frequency or wavelength. So it is called as photoelectric effect. Clear? And then emitted electron, जो यहाँ से electron emit हो चुके हैं, so that is called as photoelectrons. उसको कहते हैं हम लोग photoelectrons. So this is called as photoelectrons. Clear? And these emitted electrons is called as photoelectrons and photoelectric current. So photoelectric current. Now third definition for photoelectric current, the current which is produced in the circuit. जो यहाँ current बन गया, the current which is produced in the circuit, so it is called as photoelectric current. Clear? So we have three definition for this experimental proof. Clear? Yeah, experimental setup. So photoelectric effect, the phenomenon of emission of electron from the metal surface when it is exposed to the radiation of suitable frequency or wavelength, so it is called as photoelectric effect. And the second definition for this photoelectrons, then emitted electrons is called as photoelectrons, and the photoelectric current, the current which is produced in the circuit, the current यहाँ जो बनता है इसको हम लोग कहते हैं photoelectric current. Clear? So this is the basic terms for the basic definition for this experimental setup, and this is photoelectric effect. Clear? So what is photoelectric effect? When this radiation is incident on the emitter plate, जब radiation यहाँ incident होती है emitter plate में, there is emission of electron, and that emitted electron is received by collect by the collector plate, and hence this milliammeter shows the deflection, and when it shows deflection, we assume that there is a production of current in this system. ये system में कोई current produce हो गया वो दिखाता है. And when there is a source and when there is no source here, अगर हम लोग यहाँ से source हटा दे and there is no radiation is incident on this emitter plate, this milliammeter does not shows any deflection. And when it does not shows any kind of deflection, so we assume that there is no photoelectric current is produced in the system. Clear? So we have this is two assumption. What we have two assumption? The first is when the source emitting the radiation and that emitted radiation is incident on the emitter plate, so there is emission of electrons, and that emitted electron is received by the collector, collect by this collector plate, and hence this current is flowing through it. So this milliammeter shows that there is some deflection, and that due to showing some deflection, we assume that we conclude that there is current flowing through this system. Okay? And when there is a second terms, and when there is no source here, and when there is no source here, and there is no radiation is incident on this emitter plate, there is no emissions of electrons, and there is no collections of electrons by this collector plate, and hence there is no current flow through it. It means that milliammeter does not shows any kind of deflection. Clear? So this is the experimental effect, setup for this photoelectric effect. Clear? Now we are jumping on this very important term of this photoelectric effect. अब ये photoelectric effect के बहुत important term के ऊपर हम लोग अभी jump करेंगे. So now see very clear. Now first कि भैया यहाँ से इलेक्ट्रॉन कितना इमिट हो रहा है और उसी इलेक्ट्रॉन्स की इमिटिंग इलेक्ट्रॉन्स की kinetic एनर्जी कितनी होगी. This emitted electrons, यहाँ से the amount of emitting electrons and this kinetic energy of this emitted electrons is कितनी होगी, ये चार बेसिक चीजों के ऊपर डिपेंड करती है. क्लियर? एंड दैट फोर मेजर टर्म्स इज व्हाट? पहला, that is potential difference between these two electrodes या two metal surfaces. फर्स्ट टर्म दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, यहां से कितने इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं और उस इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कितनी होगी, ये चार चीजों के ऊपर डिपेंड करती है. ठीक है? और वो जो चार चीजें हमारी, सो दैट इज फोर स्टेज इज फर्स्ट में हमारा ये आता है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस
between two electrodes. Potential difference between two electrodes. Potential difference between the two electrodes. Clear? So और इसको हम लोग दूसरे तरीके से बोल सकते हैं potential difference between emitter plate, emitter and collector. Between emitter and collector. So potential difference between the emitter and the collector. Clear? Okay. Now second is पहला तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है, सेकंड हमारा डिपेंड करेगा दैट इज इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इंसिडेंट radiation, effect of intensity of incident radiation. Clear? And then second, effect of frequency of incident radiation. Then third, effect of frequency, effect of frequency of incident radiation, incident radiation. And that is fourth, the photometal used. Photometal used. Okay, so the emitted electrons, यहाँ से कितने amounts of electron emit होंगे और यहाँ इन सभी की energies कितनी होगी. So it is all together is depending upon these four major factors, and that four major factor is potential difference between the two electrodes. दो electrodes के बीच में potential difference, and it is nothing but emitter and collector. And the second is effect of intensity of incident radiation. Intensity का effect कितना होगा? Effect of frequency of incident radiation, and then the last is photometal used. The meaning of photometal used, which metal we have to used in this experiment. कौन सा metal हम लोग use कर रहे हैं, इसके ऊपर हमारा ये depend करता है. ओके, चलिए तो पहले स्टेप को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन्स. सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन्स? The negative terminal of electric potential is connected to the emitter plate, while this positive terminal of electric potential is connected to the collector plate. Clear? पॉजिटिव टर्मिनल हम लोग ने कलेक्टर प्लेट को कनेक्ट किया हुआ है, नेगेटिव टर्मिनल हम लोग ने इमिटर प्लेट को कनेक्ट करके रखा हुआ है. ठीक है? If this positive terminal of this collector plate is increased, अगर मैं इसको increase कर देता हूँ, so we get the graph, and this is a graphical representation in between, that is voltage, electric potential, है ना, and there is current, photoelectric current, photoelectric current. So there is photoelectric current. ठीक है, इसको थोड़ा सा सामने ले लेता हूँ because we are seeing this cut off. ऐसे. So this is photoelectric current. Photoelectric current. Okay, चलिए समझते हैं. हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन्स. अब हम लोग यहाँ दो सिचुएशन अज्यूम करेंगे, टोटल तो तीन सिचुएशन अज्यूम करेंगे, लेकिन पहली सिचुएशन में वी हैव जस्ट कनेक्टेड दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू दिस टू इलेक्ट्रॉन्स. नेगेटिव पोटेंशियल इज कनेक्टेड टू दिस इमिटर प्लेट, व्हाइल पॉजिटिव पोटेंशियल इज कनेक्टेड टू द कलेक्टर प्लेट. Right now we are not increasing or decreasing the electric potential between these two electrons. अभी मैं फिलहाल में यहाँ से कोई increase, कोई electric potential कोई increase भी नहीं कर रहा और decrease भी नहीं कर रहा. And when there is no increasing and decreasing of this electric potential between these two electrodes, we seen that there is emission of electron from this emitter plate due to this radiation which is incident on it. अब हम लोग इसको increase भी नहीं करेंगे, decrease भी नहीं करेंगे, but still we seen that there is a spontaneous emissions of electron from this emitter plate due to this is incidence of radiation on the emitter plate. Clear? It means that there is a milliammeter shows some deflection, and hence we conclude that there is a current flowing through it. जब current flow हो रहा है तो already we are not increasing or decreasing, so we are assuming that there is a current flowing through it. And now second stage, if I am increasing the potential, positive potential of the collector plate,
कलेक्टर प्लेट का पॉजिटिव पोटेंशियल अगर मैं इंक्रीज कर दूं और जैसे मैं इंक्रीज कर दूं वी सीन दैट देयर इज अगेन इंक्रीजिंग इन द फोटोइलेक्ट्रिक करंट as we further increasing in the that is electric potential या positive potential across this collector plate, so we seen that there is increasing in the current and one point is reaching and that point is and from that particular point there is a steady current flow through it, and when there is a steady current flow through it, so that is called as a saturation current. सैचुरेशन करंट, ये हमारा सैचुरेशन करंट है. क्लियर? सो व्हाट इट मींस ऑफ सैचुरेशन करंट. सबसे पहले हम लोग दो चीजें अज्यूम करके चल रहे हैं यहां से. सो पहली चीज, व्हेन वी आर नॉट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन दिस टू इलेक्ट्रोड्स, एंड व्हेन वी आर नॉट इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन दिस टू इलेक्ट्रोड्स, so again we seen that there is a spontaneous emissions of electron from the emitter plate, and hence this milliammeter shows some deflection, so here hence we conclude that there is a current flowing through it. Clear? So that's why we are starting from here and we are assuming that so there is increasing in this current. Clear? Now if I am increasing in this electric potential positive potential between to this collector plate, so we've seen that there is a increasing in the photoelectric current, and when there is a increasing in the photoelectric current, as further increasing this photoelectric current, so further increasing in the electric potential of this collector plate, we've seen that there is a maximum of values is reached. एक मैक्सिमम वैल्यू रीच हो जाएगी, एंड व्हेन इट इज रीचिंग द मैक्सिमम वैल्यू, सो वी सीन दैट देयर इज नो फर्दर इंक्रीजिंग इन द फोटोइलेक्ट्रिक करंट. इट मींस दैट एंड व्हेन देयर इज नो फर्दर इंक्रीजिंग ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक करंट, सो दैट करंट इज कॉल्ड एज सैचुरेशन करंट. उस चीज को हम लोग सैचुरेशन करंट कहते हैं. फिर से आप इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पॉजिटिव पोटेंशियल अक्रॉस द कलेक्टर प्लेट इज इंक्रीजेस, वी सीन दैट वी ओनली अ सैचुरेशन करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट. Clear? And now if I am replacing interchanging this potential difference between the emitter plate and collector plate, between these two electrodes, again we seen that if I am applying this is negative terminal to this collector plate and positive terminal to this emitter plate, now we are interchanging. So if I am interchanging this one, so it means that this negative potential is connected to this collector plate while this positive potential is connected to the emitter plate. It means that there is a reverse current. Clear? If there is a reverse current, it means that हम लोग को ये समझ में आता है कि when we are interchanging these polarities, तो again we seen that there is no changes in current. It means that there is emissions of electron and collections of emitted electrons, and hence the current flowing through it emitter. That means milliammeter shows again some deflection. Now if I am increasing this is negative potential, अगर मैं यहाँ से negative potential अगर increase कर लेता हूँ, if I am increasing the negative potential between these two electrodes, तो यहाँ से हमारा एक reverse current आना चालू हो जाएगा, and this reverse current is continuously formed to the zero. Clear? और जैसे हम लोग ने नेगेटिव पोटेंशियल को हम लोग ने इंक्रीज कर दिया, सो इट मींस दैट नेगेटिव पोटेंशियल इज कनेक्टेड टू दिस कलेक्टर प्लेट, सो दैट्स हाउ दिस graph is going to the downward direction. It means that there is negative current flowing through it, and it not suddenly zero, but it simultaneously when you are increasing, so the current is reduced to zero, and at one point it is at zero. एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहां जीरो हो जाएगा, and this zero, okay, as we reversing this electric potential between these two electrodes, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर मैं रिवर्स कर दूं, इट मींस दैट दिस नेगेटिव पोटेंशियल इज कनेक्टेड टू द कलेक्टर प्लेट. Clear? And the positive potential is connected to the emitter plate. So when there is a negative potential is connected, now we are interchanging this polarity between this electric potential between these two electrodes. तो नेगेटिव पोटेंशियल मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव पोटेंशियल मैंने इधर कनेक्ट कर दिया, सो इट मींस दैट देयर इज अ रिवर्स करंट. बट व्हेन वी सीन दैट कि एक्चुअली जैसे हम लोग ने इसको ऐसे कर दिया, तो वी सीन दैट देयर इज इमिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन. इट नॉट सडनली गोस टू जीरो. ठीक है, वो सडनली इट इज नॉट गोस टू जीरो, बट इट सीन दैट देयर इज अगेन इमिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड ड्यू टू इमिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वी सीन दैट देयर इज अ करंट फ्लोइंग थ्रू इट. जैसे करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, बिकॉज दिस milliammeter shows some deflection in it, and when there is shows some deflection in it, so we are assuming that so there is a current flowing through the circuit. Clear? Now if I am replacing interchanging this electric potential, तो negative potential मैंने collector plate को connect कर दिया, positive potential मैंने emitter plate को connect कर दिया, so it means as we are reversing this electric potential, and due to reversing this electric potential, this current is suddenly not reduced to zero, still the current is flowing through it.
Now if I'm increasing the negative potential, अगर मैं फिर से negative potential को increase कर देता हूँ, so we seen that so there is a graph and there is a current is flowing in a downward direction. Clear? It means that there is some amount of current again goes in a downward direction and further increasing in the negative potential to this collector plate. तो एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जहां पॉइंट पे करंट कितना हो जाएगा, जीरो, और जहां करंट जीरो हो गया उसको हम लोग कहेंगे दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल. Stopping potential. The meaning of stopping potential, the negative potential at which the current is, photoelectric current is reduced to zero. So it is called as stopping potential. Clear? So इस चीज को हम लोग stopping potential कहते हैं. What is stopping potential? If this negative electric potential is connected and due to this negative electric potential, this current is reduced to zero. ठीक है, करंट कितने से रिड्यूस हो गया, जीरो से रिड्यूस हो गया, मतलब जीरो तक रिड्यूस हो गया, तो वो टर्म को हम लोग कहते हैं दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल. सो दिस इज फर्स्ट एक्सप्लेनेशन अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, emitter and collector. Okay, now the second explanation of effect of intensity of incident radiation. इंटेंसिटी इफेक्ट देखेंगे अभी हम लोग. जो इंटेंसिटी इफेक्ट का मतलब जो रेडिएशन यहाँ से इंसिडेंट हो रही है उस इंसिडेंट रेडिएशन का इंटेंसिटी इफेक्ट. Clear? So again we are seeing the graph between this potential, electric potential and current. तो अगेन हम लोग यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लेंगे. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड हियर इज फोटोइलेक्ट्रिक करंट. Photoelectric current. So effect of intensity of incident radiation. Effect of intensity of incident radiation. Again this terms is almost same. ठीक है, अभी हम लोग टर्म्स को सेम रखेंगे. मेक श्योर कि जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ले रहे थे तो हम लोग इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी हम लोग फिक्स रखेंगे. ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज फिक्स्ड इन दिस फर्स्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन्स, जो अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले देखा था. हम लोग ने इन दोनों को हम लोग फिक्स रखेंगे. क्लियर? अब सेकंड को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग फ्रीक्वेंसी को फिक्स रखेंगे. अगेन वी आर चेंजिंग दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. द चेंजिंग इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इट मींस वी आर इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी इज इंक्रीजिंग फ्रॉम I to twice I. इफ आई एम रिप्रेजेंटिंग इंटेंसिटी इज बाय I, अगर मैं इंटेंसिटी अगर मैं I से डिनोट कर दूं, है ना, so if the intensity is denoted by I, so if I is increasing from I to twice I and from twice I to thrice I. Clear? And again we have assuming that is the same electric potential, that is positive terminal of electric potential is connected to this collector plate, while this negative potential of electric potential is connected to the emitter plate. As we increasing the electric potential, positive electric potential of collector plate, and intensity is increasing from I to twice I. ठीक है, अगर मैं इंटेंसिटी कहां से कहां इंक्रीज कर देता हूं, अगर इंटेंसिटी आई एम इंक्रीजिंग फ्रॉम I to twice I, where I is intensity of incident radiation, and from twice I to thrice I, again we are increasing the electric potential. Clear? So again we seen that किसी वहां से सबसे पहले जो हमारा करंट तो फ्लो होता ही रहेगा पहले, चाहे इंटेंसिटी आप इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, देयर इज करंट फ्लोइंग थ्रू इट. अगेन फ्रॉम दिस I, अगर मैं पहले करंट के लिए इक्वेशन बनाऊं, पहले इंटेंसिटी के लिए इक्वेशन बनाऊं, एंड इफ दिस पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इंक्रीजिंग टू द कलेक्टर प्लेट, तो वी गेट द ग्राफ लाइक दिस. अगेन वी गेट द सैचुरेशन करंट. ठीक है, सो फॉर दिस वन ये किसके लिए हो गया, ये जब इंटेंसिटी आपकी क्या रही I. ठीक है, अगेन दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिर से हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इंक्रीजिंग, द पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर प्लेट इज इंक्रीजिंग एंड द इंटेंसिटी इज इंक्रीजिंग फ्रॉम I to twice I. So again we seen that, so again there is increasing in the current, and again after certain amount of time, या certain amount, so it's seen there is saturation current. Clear? So this is for twice I. ये किसके लिए है, twice I. ठीक, again this intensity is increasing from twice I to thrice I, and electric potential is again increasing from positive potential, मतलब positive potential से अगर मैं electric intensity या electric potential increase कर दूं, so again this we seen that there is a graph, and again we seen that there is exact graph like this. So it means that there is increase in this current thrice I. So increase in the current in the same ratio for I
ट्वाइस आई एंड थ्राइस आई। ठीक है, तो जो करंट का इंक्रीजेशन हो रहा है, सो इट मींस दैट दिस इज अ सैचुरेशन करंट। ये आपका कौन सा करंट कहलाएगा ये? सो दिस इज योर सैचुरेशन करंट। सो दैट इज अ सैचुरेशन करंट। ये इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है। जैसे हम लोग पहले टर्म्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वैसे इंक्रीज कर रहे थे, वैसे ही हम लोग इंक्रीज करेंगे। एक बार आई के लिए इंक्रीज करेंगे, एक बार ट्वाइस आई के लिए इंक्रीज करेंगे, एक बार थ्राइस आई के लिए इंक्रीज करेंगे। सो वी सीन दैट अगेन देयर इज when we are not increasing the electric potential and when we are not increasing in the intensity, but we seen that there is a current flowing through it। जैसे वहां से करंट फ्लो होता ही रहेगा, दैट्स व्हाई वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। ठीक है, इस यहां से हम लोग ने चालू किया हुआ इसको। ठीक है, and when we are starting increasing the positive terminal across this collector plate, we seen that for this current for this intensity I, so again there is a current increasing in the current, and after some certain amount of current, so it's C, there is a steady current, and that is current is called as saturation current. Similarly for twice I, so again there is increasing in the intensity, and increase in the intensity we get the saturation current. Clear? So again we are increasing in the intensity, so we get the again saturation current for thrice I, for twice I, and for I. So this current is increasing the same ratio for I, twice I, and thrice I, as we increasing the positive potential of the collector plate. Clear? So again from this one, again we are इंटरचेंजिंग दिस इक्वेशन, मतलब इंटरचेंजिंग दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर मैं इसको इंटरचेंज कर दूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इंटरचेंज कर दूं, बट वी सीन दैट देयर इज, जैसे ही मैं उसको इंटरचेंज कर देता हूं, इट मींस दैट नेगेटिव पोटेंशियल इज कनेक्टेड टू द कलेक्टर प्लेट। नेगेटिव पोटेंशियल कनेक्ट कर देता हूं मैं कलेक्टर प्लेट को, और पॉजिटिव पोटेंशियल मैं कनेक्ट कर देता हूं इमिटर प्लेट को। ठीक है, तो वी सीन दैट देयर इज नो सडन डिक्रीजिंग इन द करंट। क्लियर? The current is again flowing through it, that means emitter plate से इलेक्ट्रॉन इमिट होते ही रहेंगे, कलेक्टर रिसीव करता रहेगा, but current is flowing through it. Clear? But as we increasing in the reverse direction, electric potential, the reverse electric potential, so we seen that the current is also reducing, and after a certain amount of time this current is reduced to zero, and again this current reduced to zero, so it is called as a stopping potential. Stopping potential. Stopping potential. Clear? It means that stopping potential is independent of intensity of incident radiation. ये जो stopping potential है आपका, so that stopping potential from this all together explanation we seen that this stopping potential is independent of incident radiation. ये stopping potential is totally independent. किसका independent होगा? Intensity of incident radiation. But this intensity of incident radiation is again directly proportional to the photoelectric current. If the intensity is higher, then the photoelectric current is also higher. If the intensity of this incident radiation is lower, then the photoelectric current is also lower. So from this two terms, from this second explanation, we seen that this stopping potential is independent of intensity of incident radiation, and the second term is what? The intensity of incident radiation. Intensity of incident radiation is higher, then the photoelectric current is also higher. If the intensity of incident radiation is lower, then the current flowing through this photoelectric current is also lower. Clear? So this is about the second explanation. Now we are seeing that is third explanation continuing. अब मैं इसका थर्ड एक्सप्लेनेशन हम लोग देखें, तो व्हाट इज आवर थर्ड एक्सप्लेनेशन की भैया हम लोग को देखो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट लेना है हम लोग को। ठीक, सो व्हाट इज इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट क्या होगा, चलिए समझते फिर से। ठीक है, अगेन वी आर सीइंग द ग्राफ, तो हम लोग यहां लेंगे फ्रीक्वेंसी, सो वी आर टेकिंग फ्रीक्वेंसी ऑन द एक्स एक्सिस, और इधर लेंगे हम लोग दैट इज, चलिए तो यहां हम लोग लेंगे अगेन दैट इज फोटोइलेक्ट्रिक करंट, फोटोइलेक्ट्रिक करंट। ओके, सो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट देखते हैं हम लोग इंसिडेंट रेडिएशन के ऊपर। So for this effect of frequency of incident radiation, we have to fix the intensity of incident radiation.
इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड पोटेंशियल डिफरेंस भी हम लोग इसको फिक्स करके रखेंगे। ओके चलिए समझते हैं। सो वी आर फिक्सिंग दिस टू टर्म्स। कौन सी दो टर्म्स फिक्स कर रहे हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स करके रख रहे हैं। देन सेकंड इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी भी हम लोग फिक्स करके रख रहे हैं एंड वी आर सीइंग द इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इन दिस वन। क्लियर? चलिए, तो जैसे ही हम लोग देखते हैं कि कुछ रेडिएशंस उसके ऊपर इंसिडेंट होते हैं एंड वी आर फिक्सिंग द इंटेंसिटी, वी सीन दैट देयर इज नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटिंग फ्रॉम दिस वन। यहां से कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हो रहा, और जैसे फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हो रहा एंड एज वी इंक्रीजेस द फ्रीक्वेंसी, और जैसे मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करूंगा तो एक ऐसा समय आ जाएगा या ऐसी फ्रीक्वेंसी रीच हो जाएगी, वहां फ्रीक्वेंसी से पहला इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएगा। थोड़ा कंसेप्ट को बहुत अच्छे समझना इस चीज को कि वी आर फिक्सिंग द इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन्स। दिस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन्स एंड इंटेंसिटी वी आर फिक्सिंग। नाउ फ्रीक्वेंसी जैसे हम लोग ने इंसिडेंट कर दिया तो व्हाट वी सीन दैट देयर इज नो इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम द इमिटर प्लेट। कोई इलेक्ट्रॉन वहां से इमिट नहीं हो रहा, तो हम लोग ने देखा कि उसको फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करके देगा। सो एज वी इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी अगेन वी सीन दैट देयर इज नो फोटो इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड, बट at certain amount of frequency, मतलब at a desired frequency. So when it receives the desired frequency of incident radiation, तो वहां से पहला इलेक्ट्रॉन इमिट हो गया या इलेक्ट्रॉन आर जस्ट starts emitting from this one. It means that we are increasing the frequency and we are increasing the frequency. तो मान के चलो कि यहां से यहां तक जो होगी ये फ्रीक्वेंसी हमारी ऐसी फ्रीक्वेंसी थी जहां से कोई भी इलेक्ट्रॉन्स वहां से इमिट नहीं हुआ, बट एक ऐसी फ्रीक्वेंसी रिसीव होगी, वॉट एवर द फ्रीक्वेंसी इज, इट इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन द फोटोमेटल विच इज यूज्ड। तो एक ऐसी फ्रीक्वेंसी हम लोग रिसीव होगी जहां से इलेक्ट्रॉन इमिट होना चालू हो गया, पहला इलेक्ट्रॉन इमिट होना चालू हो गया एंड अगेन वी साइमल्टेनियसली इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, सो वी सीन दैट there is photo electrons are emitted and due to emission or continuously emission of photo electrons we see that there is graph like this। ठीक है, ये कुछ ग्राफ हम लोग को कुछ ऐसा मिला। ठीक है, सो दिस फ्रीक्वेंसी द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मतलब एक ऐसी कम से कम फ्रीक्वेंसी जहां से इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रिक करंट बनना चालू हो गया या फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट होना चालू हो गया, उस फ्रीक्वेंसी को कहते हैं हम लोग दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, that frequency is called as threshold frequency. What is meaning of threshold frequency? The minimum frequency of incident radiation through which the electrons are just emitting from this emitter plate. The minimum frequency of incident radiation through which the electrons are just emitting from the emitter plates, so it is called as a threshold frequency. And ये आपकी threshold frequency होगी, और then when it receive the threshold frequency, then continuously current is flowing through it. It means that continuously electrons are emitting from this emitter plate. So this is the explanation of effect of frequency of incident radiation. Clear? तो थर्ड एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। थर्ड एक्सप्लेनेशन द फोटोमेटल यूज्ड। ठीक है, अब डिफरेंट फोटोमेटल्स के लिए डिफरेंट फोटोमेटल्स के लिए डिफरेंट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रहेंगी, डिफरेंट उसकी इंटेंसिटी रहेंगी, सारी चीजें उसकी अलग अलग रहेंगी। क्लियर? इसका मतलब यह है कि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां इमिट होते हैं, इट इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन दिस मेटल व्हिच इज यूज्ड एंड दैट मेटल इज कॉल्ड एज फोटोमेटल। क्लियर? ओके, तो अगेन हम लोग देखेंगे इसके बीच में फिर से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगेन वी आर सीइंग फॉर दिस फोटोमेटल यूज्ड। ठीक है, फोटोमेटल यूज्ड में देखते हैं हम लोग फिर से। ठीक है, चलिए समझते हैं। फोटोमेटल में सबसे पहले जिस समय हम लोग यहाँ पे चलिए देखते हैं फोटोमेटल विच इज यूज्ड। द मीनिंग ऑफ फोटोमेटल विच इज यूज्ड, सो दैट मींस देयर इज अ इमिटर प्लेट। ठीक है, सो दिस इज इमिटर प्लेट एंड दिस इज कलेक्टर प्लेट। इमिटर प्लेट और कलेक्टर प्लेट के बीच में जो फोटोमेटल हम लोग यूज करेंगे, वो फोटोमेटल के हिसाब से कितना फोटो इलेक्ट्रिक करंट बनेगा, कितना फोटो इलेक्ट्रॉन्स वहां से इमिट होंगे, वो देखते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, अगेन वी आर रिप्रेजेंटिंग दिस इज V and this is
वी नॉट। ठीक है, तो सबसे पहले मेटल जो यूज किया गया सो वो पोटेशियम यूज किया गया, तो इट मींस दैट पोटेशियम के लिए कुछ हमारी ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा। सो दिस इज फॉर पोटेशियम। ठीक है, so it means that this is potassium, this is V and V naught, so this is your electric potential, this is V naught. So this is for the potassium, it means that this emitter plate is used as a potassium, मतलब जो potassium emitter plate में क्या यूज कर दिया, potassium। ठीक है, सेकंड हम लोग यूज कर रहे हैं, सेकंड हम लोग सोडियम। so this is the graph for sodium। ठीक है, कंसेप्ट वही हमारा, अगेन इमीटर प्लेट की जगह हम लोग सोडियम लगा देंगे। अगेन वी आर थर्ड, दैट इज वी आर यूजिंग जिंक। ठीक है, अगेन वी आर फोर्थ। सो इट इज लाइक दैट कि हम लोग ऐसे बहुत सारे मेटल्स हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं। सो अगेन देयर इज अ टंगस्टन, अगेन देयर इज अ फोर्थ टर्म एंड दैट इज प्लैटिनम। So we seen the photometal which is used, जो photometal के ऊपर ही हमारे डिपेंड करता है कि हमारा कितना फोटोइलेक्ट्रिक करंट बनेगा। So for this potassium and for this sodium, so these are the sequence, so potassium, sodium, zinc, tungsten and this is platinum। Okay, so this is all about the four explanation about the photoelectric effect। This is all about the experimental setup of photoelectric effect। Thank you so much।